Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the salient features of Indian Constitution. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे और समझेंगे salient features of the Indian Constitution. तो फिर चलिए शुरू करते हैं salient features of the Constitution. Well, the Indian Constitution is unique in its contents and in spirit, though it is borrowed from many other constitutions of the world. But still, the Constitution of India has several salient features that distinguish it from the constitutions of other countries. So as we know that Indian Constitution is in fact a unique when it comes to its contents and spirit, but most of the content of the Indian Constitution is actually borrowed from many constitutions of the world, and therefore it is very important for us to understand what are the salient features of this constitution. No doubt that it has been borrowed from many other constitutions, but it still has several other salient features that in fact distinguish it from other constitutions of the world. ये जो भारत का जो संविधान बना है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट संविधान है भारत के लिए, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो कंटेंट्स है और जो स्पिरिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. भले वो बहुत सी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद भारत का जो संविधान है वो बहुत यूनिक है, और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि उसके जो फीचर्स है वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं, और इसी की वजह से आज हमें ये सारे फीचर्स को समझना है और जानना है. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. फॉलोइंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट salient फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दीज आर: फर्स्ट, Indian Constitution is the lengthiest written constitution in the world. Second, it draws from various sources. Third, it is a blend of rigidity and flexibility. Fourth, we have federal system with unitary bias. Fifth, it is parliamentary form of government. Sixth, it's all about finding that synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Seventh, integrated and independent judiciary. 8, it talks about fundamental rights. 9, directive principle of state policy, followed by 10th, fundamental duties. Then we have a secular state. 12th, universal adult franchise. 13, it talks about having a single citizenship. 14, it talks about independent bodies within the Indian Constitution. 15, it talks about emergency provision laid down within the Indian Constitution. And last, 16, it talks about 3 tiers government in the entire system. So these are the 16 most important salient features of Indian Constitution. Now this tutorial is gonna be very long, and in fact it would be very boring. So therefore what we are going to do here is I'm going to take every feature in detail, and subsequently we will cover all these 16 features one by one individually in separate tutorial. So for this tutorial I will be talking about the first very important feature of Indian Constitution, and that is the lengthiest written constitution of the world. And subsequently I will upload rest of these features one by one accordingly. So please stay tuned to learn and understand all the 16 salient features of Indian Constitution. So let's start with the first feature, that is the lengthiest written constitution. Well, the Constitution of India is the lengthiest of all the written constitution of the world. It is a very comprehensive, elaborated and detailed document, and the reason why it becomes the lengthiest
and the elaborated constitution of the world is because originally in 1949 the constitution contained a preamble and 395 articles which divided into 22 parts and 8 schedules, whereas presently in 2020 as of now it has a preamble, 448 articles which are divided into 25 parts and 12 schedules, and there are 104 amendments that have been made in the Indian Constitution up to January 25th, 2020. So these articles which are again divided into initially 22 parts and now we have 25 parts, itself speaks about the volumes, itself speaks about the length and in detail the work which has been carried out by successive governments and our great forefathers who have actually laid down the foundation of having a constitution for an India. And this mammoth work and the detailing which has been given in these articles and in these parts as well as schedules, and in fact 104 amendments since 1949 shows that the constitution is in fact the lengthiest constitution in the world, and therefore these aspects makes Indian constitution the world largest and the lengthiest constitution. जब हम lengthiest constitution के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि भारत का जो संविधान है जब 1949 में उसको उतारा गया तब उस टाइम पर भारत के संविधान में एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, उनको 22 पार्ट में बांटा गया एज वेल एज 8 शेड्यूल्स पे थे, और आज के तारीख में 2020 में उसका जो पूरा फेस है वो चेंज हो चुका है। आज हमारे पास एक प्रीएम्बल है और 448 आर्टिकल्स है, और ये 448 आर्टिकल्स अगेन डिवाइड किए हैं 25 पार्ट में। जब शुरुआत की थी तब हमारे पास 22 पार्ट थे और 395 आर्टिकल्स थी। आज हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल्स भी है। और फ्रॉम 1949 से लेके आज तक 2020 तक 104 अमेंडमेंट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, और जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट था वो 25 जनवरी 2020 में किया गया था। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बातें, इसकी जो लेंथ है, उसकी जो डिटेलिंग है, यही डिटेलिंग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान घोषित करती है। तो ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर 4 फैक्टर्स which have contributed to the elephantine size of our constitution, and these 4 factors are: first, the geographical factor, that is the vastness of the country and its diversity; second, historical factor, example the influence of the Government of India Act of 1935, which was very bulky in fact; third, single constitution for both the center and the state; and the fourth, dominance of legal luminaries in the constituent assembly. So these are the 4 reasons or the factor what actually led to the elephantine size of this constitution, the big size of this constitution. And obviously the first reason, the first factor is geographical factor, and the geographical factor is because our country is very vast, our country is very diverse, and we must make sure that every part of the India is represented in the constitution making. Every diversity, every ethnic group, every individual from north, south, east, west, as well as from 2 island chain have to be given space, and therefore this is the first reason why the Indian constitution has become an elephantine size, a big size. Second very important factor is a historical factor, because the Indian constitution has a big influence of the Government of India Act of 1935, which was passed way back by Britishers, and we have
covered about this well in detail, and you will find the link to this act in the description box below as well as on I button on top. So if you want to know more about Government of India Act of 1935, then please take a look in the description box as well. So that act has a huge influence because that act extensively spoke about what the Indian constitution should look like, how the governance of India should be carried out, and it was a very bulky in its own way. Third, very important, is that we have single constitution for both center and state, and we have a big landmass, we have many states, and therefore every state have their own reservation, every state have their own governance. So in this constitution everything is written specifically for everybody, and that was another reason that constitution has to make various amendments, various changes in order to give importance to all the states of Indian Union. And the fourth very important reason was the dominance of legal luminaries, and here basically we are talking about all those experts who were a part of the Constituent Assembly, and they represented basically every part and parcel of India, and they also contributed a lot in making of the Indian Constitution. So these are the four factors which actually made Indian Constitution an elephant in size, or you can say a big size. चार बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्टर रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बनाने के, वो फैक्टर्स थे जोग्राफिकल फैक्टर्स, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी कंट्री जो है बहुत डाइवर्स है, यहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कास्ट को बिलोंग करते हैं। हर एक इंसान को इस कॉन्स्टिट्यूशन में उसका स्पेस है, और इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया। सेकंड जो फैक्टर वो है, वो सीधा लिंक करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका जो ढांचा था, वो टोटली 1935 एक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। बहुत से चीज़ें हमने इसी एक्ट से ली गई है, और ये जो एक्ट जो बना वो पहले ही बहुत बड़ा था। अगर आपको इस एक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो एक सेपरेट ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज ऑन आई बटन के ऊपर भी होगा, तो प्लीज़ चेक कीजिए। तो हिस्टोरिकल फैक्टर इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। थर्ड वेरी इम्पोर्टेंट रीज़न ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होने का कारण ये है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सभी स्टेटों के ऊपर अप्लाई किया गया है, और हर एक स्टेट के बारे में उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके पावर्स, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और सारे स्टेटों को मिलाकर हमारा देश बनता है, और इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है देश के लिए और स्टेट के लिए भी, और इसी की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया है। और जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जो सारे लीगल एक्सपर्ट्स थे उस टाइम पर, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने भी अपने बहुत से विचार वहाँ पे लिखे गए हैं, वहाँ पर उन्होंने भी अपने बहुत विचार इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाते वक्त अपने विचार दिए गए थे। तो उन सभी विचारों को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो सारे भारत को रिप्रेजेंट करती थी, फ्रॉम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो उनका जो कहना था, उनके जो विचार थे, वो भी विचार जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उनके विचार लिए गए थे, और ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, और इसी के चलते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा लेंग्थियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।